सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल 90+1। आज का टॉपिक होगा क्या रोनाल्डो वर्सेस मेसी कैन वी सी। सो फीफा वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज के ड्रॉ आ चुके हैं, तो वही डिस्कशन होगा। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे दोस्त once and all again Sajil. Welcome back to the channel. हेलो। And yes, how are you feeling, bro? Everything okay? यस। वो जो मुजरा हो रहा था ड्रग एंड पे उसको छोड़ के तो बाकी सब ठीक है। अरे वो क्या था भाई, आधा घंटा तो मुजरा ही किया भाई। ऐसा लग रहा था ट्रम्प को इम्प्रेस करने आए हैं भाई सब फीफा ऑफिशियल्स। वो जियानी है ही वो, उस तरह का आदमी, अब क्या ही बोले। तो गाइस, जैसे कि आप जान चुके हैं कि हम थोड़े लेट हो चुके हैं ऑब्वियसली इसके रिगार्डिंग डिस्कस करने, लेकिन फीफा का ड्रॉ आ चुका है और ये हम पॉसिबल द गोट क्लैश फॉर द लास्ट टाइम हम देख सकते हैं क्वार्टर फाइनल में, मोस्ट प्रोबेबली रोनाल्डो वर्सेस मेसी। व्हाट आर योर थॉट्स, लाइक क्या लगता है? मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि रोनाल्डो मेसी को जितना इजी वो मिला है ग्रुप, उतना ही हार्ड उनके लिए प्ले ऑफ राउट होना। एग्जैक्टली। एंड प्ले ऑफ राउट की मैं बात करूं तो टू बी ऑनेस्ट, स्पेन हैज इट लाइक cruise a cruise trip till semis or quarters, मैं एक either बार one of ग्रुप them. But स्टेजेस का वो ग्रुप्स दिखा देता हूँ अपने व्यूअर्स को। कैन यू सी द स्क्रीन? yes, brother. सो ये ग्रुप ए है। पहले बात करते हैं ग्रुप ए के बारे में। मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, और जो लास्ट टीम जो आ सकती है वो डेनमार्क, मेसिडोनिया, चेक रिपब्लिक और आयरलैंड से आ सकती है। तो क्या लग रहा है इस ग्रुप में हु इज द क्लियर विनर? Whosoever is coming from Europe, to be honest. तो तुम्हें लगता है आउट ऑफ Denmark has मेक्सिको, a साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया में से जो टीम अभी तक फाइनल नहीं हुई है वो yes, आगे आ जाएगी? yes. Denmark most probably will come through. मेरे हिसाब से they have a very balanced squad, काफी अच्छा squad है। And आई डोंट नो ब्रो, मुझे मेक्सिको से फीलिंग आ रही है क्योंकि उनका होम में भी होगा कुछ मैचेस। सो of course, वो 2010 वर्ल्ड कप का रिकैप होने वाला है। ओपनिंग गेम इट वाज मेक्सिको वर्सेस South एग्जैक्टली Africa only. एग्जैक्टली। That iconic commentary from Peter Dury, द Shabalala. लेजेंड। Yes, Mexico is there, but to be honest, from my side, it's gonna be Denmark and South Korea. It's about डेनमार्क इज consistency, टॉप टू। guys. टॉप टू Yes, तुम्हारा डेनमार्क एंड साउथ कोरिया होगा। फॉर मी इट्स yes. मिस, फॉर मी इट्स मेक्सिको एंड साउथ कोरिया। आई डोंट, Okay. आई सी मेक्सिको लाइक फाइटिंग हार्ड टू बी द टॉप टू, और इस बार टॉप टू को जगह मिलेगा, राइट? नहीं सिर्फ Yes, टॉप the वन को। third को भी chance है. If they out of 12 third place teams, 8 will qualify. ओके, सो उसका भी अलग होगा। हाँ, इस बार तो फॉर्मेट बदल Yes, गया, टीमें टीमें भी ज्यादा हो गई। 48 या 36 टीमें अब? 48. 48, वही टीमें भी ज्यादा हो गई तो ऑब्वियसली। तो बट माय टॉप टू विल बी मेक्सिको एंड साउथ कोरिया। Okay, I will go with Denmark and South Korea. I do think Mexico will eventually go into playoffs. Yes, yes. Let's Because go I can further. really see like Mexico fighting in their home, that crowd doing their thing, and like I really want to see like मेक्सिको कुछ ऊपर से इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए मेक्सिको के लिए। कम उनका ग्रुप अगर देखे तो कोई भी ऐसे प्रूवन प्रूवन टीम तो है नहीं उनके ग्रुप में। Of सो या। course. Let's go further. यस ब्रो, या लेट्स गो Let's फर्दर नाउ। go to Group B. ग्रुप बी, कनाडा, और सेकंड प्लेस में जो टीम है वो अभी तक फाइनल नहीं हुई है, इटली,
Most probably और Italy it should be. I don't इटली see Italy आएगी moving ये, to the other three. यस। वेल्स और वेल्स का भी चांस है, लेकिन बोस्निया वगैरह से तो इटली और वेल्स का ज्यादा चांस है, और इटली को मैं भी दूंगा। तो मोटा मोटा कनाडा, इटली, कतार और स्विट्जरलैंड। सो यहाँ क्या, Yes. तुम्हारे हिसाब से क्या बनेगा इधर? Italy and Switzerland. इटली एंड स्विट्जरलैंड। सो कनाडा नहीं? Nahi, Canada, I don't see that kind of squad depth which these two countries have. The only फॉर player मी from ऑल्सो Canada who can सेम ब्रो। actually make any difference is Alfonso Davis. That's all. Exactly. For me also, it's Italy and Switzerland. Even if Wales qualify, I will see Wales in top two. I agree. Yes, ये ग्रुप काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रुप But है। Italy should not fumble this bad. It's not a hard. फिलहाल उनका क्वालिफिकेशन थोड़ा मुश्किल लग रहा है, उन्होंने पहले ही फंबल कर दी, लेकिन अगर क्वालिफाई कर दिया तो नहीं Let's be करना honest, चाहिए। that we all underrated that Norway team in the beginning until we actually saw them play. एग्जैक्टली exactly. वो तो भाई उनका तो अलग ही चल रहा है रन, वही उनका बोल रहा और हूँ. ये आयरलैंड का तो मतलब क्या ही बोलूं। सो फाइनली once again my top two will be Switzerland and the Switzerland team and qualify Italy. out of this four. So Yes. yes, and for you also same I believe, bro. Yeah. So let's move on to the group C. अब group C थोड़ा interesting है। यहाँ पे before we get to the top two, we can see Scotland and Haiti. Most probably they are qualifying. Haiti का तो शायद पहला qualification ही है, पहला it's and second है. Scotland after. If I'm not wrong, they qualified in 1950s. Okay, okay, but still these two, Haiti and Scotland, qualifying after almost 25 plus years each of them. Yeah, yeah. So it's quite a fascinating journey रही है इनकी भी। तो But Morocco and Brazil are just far too well balanced to actually एग्जैक्टली lose वो this group. ओवर पावर कर जाएगी वो, मतलब Yes. आई कैन सी ब्राजील एंड मोरक्को clearly favorites in this group, Morocco no has discussion. actually improved since 2022 World Cup, I believe. Brazil, though they Yes, have been shaky in the qualifiers, but Carlos Ancelotti is a man who can turn around a team at any given point. you know what bro, मेरा Hmm. इंटरेस्टिंग एक वो है, I will not surprise to see Scotland in top 2. Me neither. Scotland have a very good squad, to be honest, and all their players are actually on fire right now. एग्जैक्टली exactly. जिस तरीके से उन्होंने डिफेंसिव वो दिखाई है एस्ट्यूटनेस पिछले क्वालिफाइंग मैचेस में, तो आई कैन सी दे कैन बी हेडेक फॉर ब्राजील, नॉट मोरक्को बट ब्राजील स्पेसिफिकली। सो उसको कैसे टैकल करेंगे ब्राजीलियन और उनके कोच कार्लो, वो देखने में इंटरेस्टिंग हो जाएगा मेरे ख्याल से। The only मोरक्को thing तो I मुझे लग रहा है क्वालिफाई believe कर is देगी। that Brazil is lacking right now is a playmaker. And if they एग्जैक्टली exactly. find someone like Neymar is fit enough to play, then I don't see them having any problem ये तो against सही बोला। either of them, Morocco or Scotland. To be honest, that Brazilian side is far too talented. Their defensive backline is solid. They have good defensive midfielders, but not that creative playmaker kind of person. वही बात आती है ना कि वो लास्ट पीस ऑफ पजल चाहिए अभी कार्लो एंcelotti को, कि पूरा कंप्लीट टीम बना दे, मतलब फ्रॉम हेड टू टो Can जो like बोलते हैं। we have seen Rafinha play as number 10, but can he actually become that kind of a playmaker? He's a good playmaker, no doubt. But can he बट be the you are link a coach. between midfield My and attack one is question, different. since you are Mhm. a Barca fan, and one question pops up in my mind: if you are a coach of this Brazilian Uh, team and you know uh, Rafinha very well, how he press mm. and how he press the wingers and the fullbacks. So will you play him in a cam position, considering it will he will be less effective in press? That's true, but you have to see one more thing. Recent lack, Brazil has a huge list of them.
You can play Estevao at right, you can play Rodrigo at right, you can play Vinicius at left, Martinelli at left, Cunha वो can तो come in. फैक्ट्री है भाई विंगर्स की वही बोल रहा winger. So if even if you play Rafinha at CAM, it is not gonna hinder him that much. But if you, but I don't see any other guy who can actually play make as well as I him aside from Neymar. I can see bro Estevao coming as Cam, Rafinha staying in his Mm, position, and Vinicius in his position, and someone as a Cunha as a number nine. I can see Estevao playing as Cam because in Palmeiras he used to play some games as Cam, and he is that mm, like he has that prowess. But yeah, obviously Rafinha will be better defensively, I will say. mm. बट आई गेस रफीनिया को उसका बेस्ट पोजीशन नहीं खिलाया वर्ल्ड कप में तो क्या ही खिलाया रफीनिया को तो वही बात आ That's जाती है also लेकिन रैप अप that's up to करते हैं इस ग्रुप सी Ancelotti को because he is a legend of the game. यस यस I don't consider any manager in the World Cup to be actually better than him at squad management. हाँ बट यू कैन से वन थिंग अबाउट अंसुलिटी कि वो मैनेजर टैक्टिकली कुछ काम नहीं करता है वो दूसरे तरीके का मैनेजर है तो मुझे नहीं लगता वो आउट ऑफ पोजीशन लोगों को ज्यादा खिलाएगा बिकॉज ऑफ टैक्टिक्स सो I believe what Let's we see. discuss is true. But let's wrap Let's it up see this what group happens. C. Yes. Group D, So group C एक बार लास्ट के लिए बोल देता हूँ for me is Brazil and Brazil and Morocco. Morocco. Yes, for you also Same same. for So me. let's go to group D. अब यहाँ ग्रुप डी में थोड़ा सा होम नेशन पापा ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प का देश और क्या ही ड्रॉ मिला है क्या क्या रिग लग रहा है मुझे तुम आई विल बी ओपिनियन वो तो मुझे बहुत लगा है. यूएसए पराग्वे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, एंड फोर्थ में टर्की, टर्की रश रोमानिया रोमेनिया, स्लोवाकिया स्लोवाकिया एंड कोसोवो. कोसोवो में से कोई एक और मुझे लग रहा है कि रोमानिया या फिर टर्की निकाल लेगी मोस्ट ज्यादातर तो मुझे वही लग probably great midfield to be honest. यस बट हु डू यू सी इन दिस टॉप टू ग्रुप डी में क्योंकि कुछ Turkey and USA. Though I still believe Australia can be the dark horse, ऑस्ट्रेलिया आर but डिफेंसिवली सो गुड ब्रो दे हाइट एंड ऑल एकदम मतलब पूरा मतलब लेकिन आई that बिलीव is the thing. यूएसए और यस यस Turkey. यस कंटिन्यू यस यूएस एंड टर्की ऑब्वियसली फॉर मी आल्सो Yeah, सो that's true, इसमें but I won't count Australia out. नहीं नहीं वो तो है दे विल गिव सम कंपटीशन टू यूएसए इफ नॉट टर्की टू यूएसए डेफिनेटली Yes. सो Let's go to Group B then. या ग्रुप डी में भी यूएस एंड टर्की Yes. अब ग्रुप ई में बहुत एक मतलब जायंट बैठा हुआ है जर्मनी और क्या ही मतलब उनके लिए I तो think like Germany has fumbled with last 2 years. I won't be that sure, but this Germany looks quite solid. दिस जर्मनी लुक क्वाइट सॉलिड एंड उनके लिए पूरे ग्रुप में बस एक ही कंपटीशन हो सकता है वो है इक्वाडोर आई डोंट You सी can't take away Ivory Coast. They are the current AFCON champions, बट at least for the next month, बट and यस they have ऑब्वियसली many good talents as well. नहीं आइवरी कोस्ट इज द लेजेंडरी टीम ब्रो इन हिस्ट्री इफ यू हिस्ट्री उठा के देखो तो फ्रॉम द प्लेयर I'm just talking about currently, yes yes currently we and history we is the one of my favorite player used to play for both my club and this country if you of know the course, name so GDA. but बट मुझे लग रहा है ये जर्मनी का ग्रुप है और इक्वाडोर उसमें घुस जाएगी टॉप टू में I also think Ecuador is far too compact defensively. बहुत मुश्किल है उन पे गोल मारना with likes of उन्होंने Caicedo and क्वालिफिकेशन Pacho. में शायद 3 या 4 ही गोल खाए इफ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत बहुत कम खाए हैं एंड they were second after Argentina. बट उनका गेम में एक चीज मैंने देखा है दे प्लेड लॉट ऑफ ड्रॉस हाँ वो तो है. That is the only reason I think Ivory Coast has a chance. एग्जैक्टली एग्जैक्टली
So your thought group is Germany and Ecuador, right? Ecuador, Yeah, for me also Germany and Ecuador. अब आते हैं ग्रुप एफ पे जहाँ पर है नेदरलैंड जापान, थर्ड प्लेस में यूक्रेन, स्वीडन, पोलैंड और अल्बानिया में Poland. से कोई एक, जो कि मोस्ट I प्रोबेबली guess दो it will टीम, be Poland in my eyes. पोलैंड एंड यूक्रेन, बट पोलैंड या, और लास्ट में तुनिशिया। Tunisia, Tunisia have तो been very इसमें solid. This is इसमें the भी closest thing to group of death in my eyes, where या either four बिकॉज of दैट can actually qualify. एग्जैक्टली बिकॉज बार आई डिडंट सी टुनिशिया दैट मच, बट जो जो हमने प्रिडिक्ट किया है नेदरलैंड जापान और जो पोलैंड आएगी, इन तीनों का मतलब बहुत अच्छी टीम है और तीनों एक दूसरे को हरा सकती है, ऐसे टीम है। Hmm. तो I फिर will भी माय say the फेवरेट same विल for बी नेदरलैंड Tunisia. एंड जापान। माय फेवरेट टू क्वालिफाई फ्रॉम दिस ग्रुप विल बी Mhm. नेदरलैंड्स एंड जापान। व्हाट अबाउट यू? I will actually go with Netherlands and Poland. Actually, I like the, what do you say, I will give the experience side a bit more chance. यू नो व्हाट, पहले मेरा भी थॉट ये था, लेकिन आफ्टर सीइंग जापान लास्ट वर्ल्ड कप और आफ्टर सीइंग देयर प्रोजेक्ट, थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ा। ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ मतलब हाइप भी होता है वो एक टीम के बारे में, Mhm. फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया आ रहे वो लोग, बट स्टिल आई कैन, इफ द परफॉर्मेंस दे गेव लास्ट वर्ल्ड कप एंड इफ दे डोंट क्वालिफाई इन दिस वर्ल्ड कप, तो वो पूरा उसका मतलब नहीं बनता फिर। सो आई I know, बिलीव but दैट last World Cup, you have to remember that they lost to Costa Rica as well, कोस्टा even though they रिका, defeated Germany and स्पेन, Germany and या Spain, but they lost to Costa Rica. यस यस, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। नो, उनका ये है ना कि फिजिकल टीम के साथ उनको, उनका सबसे बड़ा टेस्ट होता है फिजिकल टीम, जो कोई टीम Poland is quite फिजिकली। physical, to be honest. Poland plays a यस, lot of physical stuff, and Netherlands defense is I, godly level physical. तो ये जापान का टेस्ट होगा इस ग्रुप में कि वो अपने Yeah, जो जिसके वजह से वो निकल गए थे उसको टैकल कर पाए कि नहीं इन 4 साल में। तो फिर भी आई विल गिव yeah, जापान ए चांस फॉर दैट, लाइक of क्योंकि course, इफ यू understandable. सी द प्लेयर्स राइट नाउ इन प्रीमियर लीग ऑल्सो, जैसे कि लीड्स के लिए टनाका, जिसने चेल्सी के लिए भी गोल, चेल्सी के अगेंस्ट भी गोल मारा और कल लिवरपूल के And अगेंस्ट भी Liverpool इक्वलाइजर finished मार के। second. यस, सो टनाका हो गया, मिनीमिनो हो गया, एंड तुम्हारा क्या बोलते थे, ब्राइटन में एक प्लेयर है, आई डोंट नो, आई एम Mhm. फॉरगेटिंग हिज नेम, इट्स अ वेरी गुड लेफ्ट विंगर, वो भी हो गया। तो देयर आर प्लेयर्स इन जापान एंड नेदरलैंड्स, तो ऑल वी नो दे आर लाइक हैविंग द Yes, बेस्ट midfield and best defense right now, like yes. on paper, obviously. Mhm. So for me, it's Let's Netherlands go and to Group Japan. G then. Before going to Group G, just I didn't recall your favorites. So for me, it's Netherlands and Netherlands Japan, and Poland. Poland. Poland, Netherlands and Poland. Okay, okay. So moving ahead to Group G, जिसमें है बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान एंड न्यूजीलैंड। ये बेल्जियम के लिए तो इजीली वॉक इन द पार्क होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? Yes, yes, and I think Iran should win this the second place as well easily. Yes, Egypt, yes, though yes. they have Mohamed Salah, but they still have to win a single game at the World Cups. यस, एंड मैं भी ईरान को ही सेकंड प्लेस में रखूंगा क्योंकि उनका जो मैचेस में काफ़ी फॉलो किया, बी इट एएफसी एशिया कप और बी इट फ्रेंडलीज अगेंस्ट इंडिया एंड ऑल, आई कैन सी देम प्लेइंग एज a unit defensively. Yes, So I will put Belgium and Iran. This is a very straightforward, although I would like to see New Zealand win at least one game because I have a connection with them, be it cricket or be it football. This country is very good, but I don't see them topping the group in any way. No yes. disrespect, but Belgium and Iran for me. Iran. Let's go to Group H. Let's go to Group H and The Spain, World Cup the favorites, of course. favorites. Yes. Spain's Cape Verde for the first time. Saudi Arabia, Saudi the Arabia. last World Cup host. I think this No, is not the last World also Cup very host. straightforward. Mhm. And Uruguay. Saudi Spain Arabia. definitely walk in the park. But who do you put in Let's second? do Uruguay or Saudi?
The Saudi Arabia shocked the world defeating Argentina yesterday. Yesterday, I'm saying 3 years ago. The opening But match, yeah. yeah, but I don't see them go through this group. At least not the top two positions. I think it's going to be Spain and Uruguay. I think too. Spain definitely walk in the park for them as well. Uruguay need to fight Saudi Arabia and Cape Verde एक मैच जीतना चाहिए उनको भी लेकिन it will be tough against Uruguay and Spain. Yes. Maybe Saudi को वो हरा सकते हैं और vice versa. But yeah, for me also it's Spain and Uruguay, clear favorite. Mm, Let's go to Group I. This is also one of the group is that is close to I group of think that. this is the closest to group of death, actually, the closest Ex- thing to group of death. exactly. If before going to the teams, the third place, if Bolivia, what is the other team, bro? If you can say the new Suriname. team, yeah. If Bolivia, Suriname. Suriname, and Iraq, most probably Iraq will qualify. Then this group will become literally become group of their defensively midfield wise. Do you think that? Of course. And like, though France and Norway are the favorites because how they play, but Senegal is Senegal is a very good team, stacked. bro. If you don't Yeah, yeah, like, they're actually quite stacked compared to other African teams. yeah, exactly. Big players playing. Sadio Mane in the goalkeeper. Mendy is there. Yeah, Also, if the greatest striker of all time, Nicholas Jackson is playing. So yes, greatest ahead of Mbappe and Norway. I think Mbappe and Haaland have to compete with Nicholas Jackson in this group. To be very honest, indeed. yes. So, but still, I will put But France and Norway for the yes, of favorite. course, me too. That is the best matchup in group stage, to be honest. Exactly, that will be very good. In the हमने देखा है काफी बार रियल मैड्रिड और मैन सिटी को लेकिन वर्ल्ड स्टेजेस में अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए शायद ये पहली बार they will face each other if I'm not wrong. Yes. So yes. Let's So go to group J France then. and Norway. Now let's go to Of Group course. J. The defending champion is there. Argentina, Algeria, Austria, and Nigeria, Jordan. yeah, Jordan. I will say this that Argentina got easiest draw compared to the last World Cup. Yeah, yeah, of course. Last World Cup, they at least have Poland and Mexico. उनको ऑस्ट्रिया थोड़ा कंपटीशन दे सकती है बाकी आई डोंट थिंक अल्जेरिया एंड Austria जॉर्डन under उतना Ralf Ragnick has been quite good. And दैट्स व्हाट आई एम Algeria is सेइंग what is a pocket-sized dynamite. They might just explode and do some it crazy is stuff. you can say this for all the African nations they are like that only Yeah. so Jordan, though also they have this been very good recently, but the World Cup stage pressure is something I don't see them stand. handling it right Yeah, also this is very special group because this man the goat himself maybe he's playing for the last time in this World Cup for Argentina, I don't obviously. think so. It's maybe it is So definitely the last. also some crazy thing will happen if the other group favorites will qualify and this group favorite will qualify. We will get to that in the At last. top position actually. But yeah, so my clear favorite will be Argentina and Austria. Yes, me too. So now let's Group A. from one goat to another, from one nation to another favorite. Portugal, North Macedonia, Jamaica, and what is this? Congo, right? Congo. Congo. Yeah, and the third place, the third team is Uzbekistan and Colombia. So this Colombia. is I also think it's quite straightforward. Portugal and for Colombia. Portugal. Only difficult match they will face will be Colombia. This Colombia. Yeah, Colombia who recently was the finalist in Copa America, and they've been They have a playing good good. squad. Luis Diaz is their main player, and James Yeah, of course. Rodriguez also. Don't forget that name. He's a Mm. very important Who player.
हामेस रोड्रिगेज उनके लिए। बट स्टिल आई विल बिलीव पोर्टुगल शुड टॉप दिस ग्रुप, बड़े भैया obviously Colombia the coming to second, of course, I agree. yes. So before jumping to the other group, this two group, why I said this is interesting two group is if if you guys see the नॉकआउट का जो मैपिंग होता है, Bracket. यस Mhm. ब्रैकेट जो होता है, अगर अर्जेंटीना और These two have पोर्टुगल the ने easiest group, but the hardest playoff route. एग्जैक्टली अरे मैं बोल तो रहा हूँ इट विल बी हार्डर देन फाइनल when these two will play each other, and it will be a match that will be more not important but more exciting, more entertaining than the final itself. Mhm. Because if these two पोर्टुगल एंड अर्जेंटीना अगर अपना अपना रेस्पेक्टिव ग्रुप टॉप कर देते हैं, उसके बाद जो अगला नॉकआउट है दोनों अपना अपना रेस्पेक्टिवली जीत जाते हैं, सो जो द सेकेंड नॉकआउट जो होगा जो कि क्वार्टर फाइनल होगा आई बिलीव, Third, वो they will face each other. Yeah, the 32. third knockout. Yeah, the third. If I was mistaken because the format has been changed now. Round of 32 भी होगा, फिर round of 16 होगा, फिर quarter final. तो quarter final में अगर दोनों survive कर देते तो they will face each other. Messi versus Ronaldo, bro. Portugal On the world's versus biggest stage Argentina for the one final time. for the one final time and World Cup में शायद पहली बार और आखिरी बार Messi and Ronaldo will face Ah, each of other. course, it is first and last time. Is it the debate settling match? If मेरे ख्याल से तो Portugal डिबेट wins and somehow Portugal wins this game and then go on to win the World Cup, then this game might be the end of debate. But until Portugal actually wins, I don't see. मेरे लिए तो द डिबेट हैज लॉस्ट द क्रेडिबिलिटी नाउ वंस मेसी हैज won the world cup last year. सो मेरे ख्याल से तो डिबेट यहाँ होना नहीं चाहिए, फिर भी द एंटरटेनमेंट द मतलब जो अट्रैक्शन लाएगा ये मैच, इट विल बी मैसिव मैसिव राइट. Of course. So let us सो go to the final team, final group, I mean. सो द It फाइनल is a good group as well. group L, and I hope England don't face the L this time, considering the They will, squad they and will. I'm pretty the sure about that. considering their squad and manager, bro, I really hope to see them as in final. I really hope because I the also manager want to see them succeed, but this team isn't made for championships. बात तो है, लेकिन उनका ग्रुप एक बार देख लेते हैं, इंग्लैंड, क्रोएशिया, गाना एंड पनामा, जो Straight कि इंग्लैंड away, के we लिए have two favorites. या इंग्लैंड एंड क्रोएशिया, मॉड्रिच, लुकिता अपनी विल प्ले देयर. लेकिन Perisic. मेरे को जो लगता है इंग्लैंड के Mhm. बारे में, बिकॉज ऑफ द कोच दे हैव राइट नाउ, Thomas Tuchel, and I love him very much. He was a Chelsea coach जिसने हमें I दूसरी understand. बार चैंपियंस लीग जिताया, तो आई एम रूटिंग फॉर हिम. बट आई डोंट, एज यू सेड, आई डोंट सी दिस टीम टू हैंडल द प्रेशर. द ओनली टू प्लेयर लाइक आई सेड बिफोर टू यू जो कि कुछ कर सकते हैं इस टीम के लिए इज बेलिंगम एंड कोल पाल्मर. एंड इन डिफेंस आई बिलीव रीस जेमन उनके कुछ मार्क गेही वगैरह कुछ कर सकते हैं. बाकी आई डोंट सी एवरी प्लेयर मिसिंग the big chances. So as you said, but I want them to see in the final. Mhm. So क्या लगता है इस ग्रुप That में कौन टॉप I करेगा? don't see England. I think the first match they will tell Croatia or England. The Croatia have had a dominance over England in the World Cups in past few years, Hmm. but I still see England winning it. Yeah, this ग्रुप में इंग्लैंड ऑब्वियसली दे शुड विन. अगर ये ग्रुप में भी तुम सेकंड भी आते तो आई बिलीव दैट्स ए एल फॉर इंग्लैंड, Of course, considering the best they have the best squad for almost a decade now, and before also they used to have best squad and they didn't win shit. So this time it's really time to prove. और उन्होंने मेरे ख्याल से this is the first time they have appointed a coach outside from England. yes, yes. Yeah, so अगर तुम इतने
अपना ट्रेडिशन को छोड़ रहे हो तो कुछ तो प्रूफ करना पड़ेगा, राइट? तो लेट्स सी। हम्म। तो दिस वेयर द होल ग्रुप। आई होप हमने कुछ मिस नहीं किया, ब्रो। नहीं, योर फेवरेट टीम? it's either France or Spain. Your like not the favorite to win, your favorite, your personal favorite team. Oh, that way my dad has been a Brazil fan since 70s, and so am I. And Okay, since Brazil. Messi has already won the World Cup, I have no reason to support Argentina as much as I used to. So now I'm a proper Brazil fan now. For me, I it's Portugal and France and England because of the coach. But yeah, my top two will be Portugal and France. Mine will be Brazil and Argentina first, Brazil though and I Argentina. really like the kids in Spain, whom I consider the favorite. Mm, I I cannot not see them till semi-final. Whom लाइक सेमीफाइनल तक तो उनके सी टीम पहुंचा देगी, मुझे तो ये लगता है, स्पेन की। I जो कि agree. Spain, हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी टीम, द बिग बिग गन्स ऑफ द वर्ल्ड कप। सो um, उनका स्क्वाड के बारे में अगले वीडियोस में एक एक करके, बट जस्ट टू but बी before या we end, I will say this. Though everyone has been like undermining Brazil recently a lot, which is deserved because how bad they have been. यस But ऑल्सो Brazilian squad is one of the best in the world, and I truly believe in Carlo Ancelotti, and it's I won't be surprised to see them actually win the World Cup, and I hope they win it. एग्जैक्टली। और क्योंकि नाउ फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो चुका है, काफी टीम के लिए जीतना इस कंपैरेटिवली इजी हो गया है, एटलीस्ट टिल सेमीफाइनल। But coming to the next question for you, which is the most like opening game or the group stage game that you are excited for in the group Of stage? course, there are two actually, Yes, please name Brazil and it. Morocco. Okay, Brazil and Morocco, uh, France and Norway. And I'm also quite excited for what you say, Croatia. Croatia and England. Yeah, Croatia and England. these Yes, three me games too. are My what I'm looking for. me too. Me too. For me, it will be France and Norway, and the second game will England, be Croatia. for me not England. I want to see Netherlands and Japan. ये मेरे लिए बहुत exciting. I Oh, want to see how Japan will do against these physical teams. So these two will be my top two matches from the group stage. And any knockout matches that obviously I know your answer, but still I will ask it. Any knockout matches that you are most excited for? aside from what you say, if so like everything goes as we predicted, Mm-hmm. and aside from Argentina and Portugal, I'm really excited for two matchups. One is in the round of 16, that which is France versus Germany, Mm-hmm. and the second one is a quarterfinal match between Brazil and England. Exactly. My for me is obviously I am dying to see this match Argentina versus Portugal, not because of just for Messi and Ronaldo, but because of the team they have become. Like Argentina, we Mhm. all know last 4 years what they have been achieving, and Portugal, the super squad they have, they should do good. They should do good. They have world class midfielders right now in Vitinha, Jao Neves, and they have Bruno Fernandes. Bruno Fernandes also, but they have the most like best left back in Nuno Mendes. Obviously, Cristiano is there as always. So वो भी मैच एंड अर्जेंटीना को तो हम पता ही है, बिकम द पावर हाउस राइट नाउ इन कोपा, सो वी नो दैट. But the next match I'm excited about is Brazil and England. I want to see how Carlo Ancelotti and Tuchel, the most two successful manager in my eyes, not Tuchel as much, but
the most to astute manager. I want to see how they will play each other because when, if you remember, when they were in their respective club, Real and Chelsea, there was some rivalry for little time, but the spark was there. इफ यू रिमेम्बर, Mhm. रियल वर्सेस चेल्सी, दो Mhm. सीजन में दोनों बार हुआ था। एक बार चेल्सी ने हाथ धोया, दूसरा बार रियल मैड्रिड ने हाथ धोया। Yeah, सो आई but वांट टू सी Ancelotti दैट। didn't lose to Tuchel that way. You have to remember that as well. या दैट इज आल्सो ट्रू, या दैट इज आल्सो ट्रू। It was Zidane under Zidane. जिदान, Yeah, या yeah. या but they almost defeated, they defeated but aggregated में, they defeated Real Madrid in Santiago Bernabeu, लेकिन एग्रीगेट में रियल जीत गई थी। That was a तो miracle season for Real Madrid, let's be honest. यस, It was miracle after miracle. That Real Madrid was unbelievable. some magic shit. Yeah, Your finalist. from up to one side, I'm gonna go with Spain. Mm-hmm. I see them defeat what is it, France in the semis. Okay, And my main reason is that I still don't see any proven performer in France aside from Kylian Mbappe. exactly. And it has been proven time after time after time. And with the retirement of likes of Griezmann and Giroud and Benzema, it's more something coming. Mm. And from the downside, though I want to say Brazil, but Argentina are far more balanced. So your finalist And will be Spain versus Argentina. yeah, yes, and I see Spain eventually coming on top. Mm. For me also, one side में Spain रहेगा obviously, and the other side will be Portugal for me. If they beat Argentina, I I don't see how they cannot go to the final, even though the road will be very tough, tougher than Argentina, but the confidence they will have after defeating the world champion, the defending champion, Of course. I believe they will go till the final, and we can see the National League final फिर से, and I can see Spain winning it, even though I want, my heart is saying Portugal will win, but Spain is too good. But I will say these two is my finalist. Though I am a very big Barca fan, but Spain winning the World Cup will do a lot of harm to Barcelona because of the hype Lamine will get. Yes, yes, that is also true. That is the only thing I'm worried about. Let's not get to the personal club grudges now, shall we? It's not personal club grudges, yeah. It's so literally he won the Euro and his hype skyrocketed. People saying Messi and Ronaldo. Can you imagine what Hmm. will happen if he win the World Cup? आई थिंक ही शुड लर्न फ्रॉम एम्बापे, उसने भी 18 में जीती थी, बट उसने इतना हवा नहीं बोला। एम्बापे है भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट। एम्बापे जैसा हम्बल इंसान कोई नहीं है। इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ बारसा फैंस डोंट हेट हिम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये तो बात सही, लेकिन कुछ करना पड़ेगा लामिन यमाल का मैच, बट आई कैन सी हिम विनिंग ब्रो, एंड आई कैन सी हिम, दिस विन विल मेक हिम हम्बल। आई डोंट नो, वेरी उल्टा बोल आई रहा हूँ होप मैं, सो। लेकिन आई लेकिन होप आई सो, आई होप थिंक सो। आई वुड लव दिस टू आर, सी। या See, I'm not against speaking, but you have to know the limits of speaking that way. You can't just spew nonsense and come out बट with आई it. टेल यू व्हाट, आई टेल यू व्हाट, अगर कुछ Mhm. चीज उसको हम्बल जरूर बना सकती है, इज द फाइनल ही विल लूज। नेशन लीग्स का फाइनल ने उसे हम्बल नहीं बनाया तो चांसेस कम है। The only thing that can actually make him humble is actually listening to others and not his dad. बात तो सही है, सो दैट इज Okay, our wrap bro, for it's the, 40 minutes of of a video. Let's quit now. yeah, let's wrap it up. That is our discussion regarding the FIFA World Cup draw, and possibly we can see the two legends for the last time competing with each other in the World Cup for the first time.
and for the last time also. So that's it. Are you excited, bro, to for the World Cup in general? What kind of question is that? Exactly, my Can bad. we ever excited to the, let's be honest, any football fan, it's the most exciting thing for them. I will tell you why I asked you that question is I am also excited. I only have issue where it is taking place and the timings. सुबह सुबह उठ के देखना पड़ेगा but let's see. Yep. So that's it, guys. Have a nice day. Good night. Signing off. Me and Shazil. Bye bye.